Thai fraternity. I welcome you all in this today's webinar. On behalf of Tecnia Institute of Advanced Studies and the Institution Innovation Council, I, Dr. Niveta, welcome you all in this webinar. We are celebrating the World Entrepreneurs Day. It's on 21st of August, and the entire week we are celebrating different programs under the mandate of Ministry of Education's directions. And we have started with poster making competition or entrepreneurs. Then there was a panel discussion and invited talk from the students who are entrepreneurs as of now from the college. And today in the light of that only we are having a session. The session is on the hindrances to entrepreneurs, and I'm fortunate enough to have a good panel members with us. With all permission, now I would like to request the panel members to accept my request for today's webinar. Before I really proceed with the procession, let me give a very brief introduction to the different guests who are there with this today's program. We have Mr. Vikesh Bansal. He is a chartered accountant and he he qualified in 1998 and he is MBA, that is Master in Business and Finance from ICI. He is in practice since then and he has more than 2 decades of experience. He has vast experience in taxation, audit, and finance. So he has different branches. One is Hyderabad, and in one branch he is planning in South as well. He's with these offices and with his expertise, he is catering to the corporate firms and individuals. So welcome, sir, for this today's program. Along with this, we have now I would like to invite a few of the guest members for today's webinar. We have Mr. Vikesh Bansal. He is a chartered accountant and is qualified in 1988, and he is master in business and finance from ICAI. And since then, he is in practice. He has vast experience of almost 23 years in taxation, audit, and finance. He is an office in Delhi, and he is also working from Hyderabad, and is about to expand more his branches. He is catering to the demands of corporate firms and individuals for their various financial obligations. So welcome, sir. I would also like to invite Mr. G.S. Singhvi. He is the founder of Hindustan Fibers Limited. He is a chartered accountant, which he did in 1974, and in 1975 he did his company secretariat as well. He has been working with large corporate houses in senior positions from 75 to 1990, and after having gained considerable experience, he had started his own business and set up textile unit in the year 1992. Hindustan Fiber Limited Group is a team of more than 500 personnel working across strategic business interests in real estate, education, textiles and logistic park, etc. under the visionary leadership of Mr. G.S. Singhvi. HFL Group has been scaling new heights by developing townships, group housing, education institutions, and about 500 acres of farmland ever since its foundation was laid in New Delhi in 1992. The group has dominated presence in states of Rajasthan, Delhi, NCR, and MP. He has extensively traveled to various countries for business and as part of industrialist delegations. He advises the various governments on policy matters and state budgets in the capacity as chamber representative in various positions. He is socially active and worked with various organizations like PhD, Rotary, Mahavir International, etc. Warm welcome, sir, in today's webinar. And now I would like to invite the Dr. S.N. Chander. He is chairman for Shield Biotech Limited. He had been enterprising all along his life, and he is hardworking, disciplined, and clear-minded person, always willing to learn while working. He did LLB, CA, and PhD, which is remarkable. He is a self-made man, and the remarkable feature of his life and career are that he has given coaching to 10th class student when he himself was studying in class 10th.
He did his PhD in the year 2013 at the age of 64 years. He has extensive knowledge of textile, banking, dairy industry, biotechnology, tissue culture, greenhouse, fruit, flower, vegetable, organic cultivation, and education. He is associated with SUNYE, an NGO working for deaf and dumb children, as a patron of an organization. This organization teaches and prepares children who cannot speak, make them to talk and live a normal life in society. He is patron of Rashtriya Kavi Sangam, that organization to promote Indian culture and heritage. His company Shield Biotech Limited is almost 26-year-old company. It is a multi-division, multi-location company, deals in tissue culture, greenhouse, horticulture, floriculture, imports, seeds, planting materials, R&D, environment, fertilizers, and adoption and certification of organic farming. The company, with a strength of 1,000 employees and having turnover of rupees 100. So huge round of applause, sir, for you, and a warm welcome for this webinar. Last but not the least, I would also like to invite Dr. Ajay Kumar, Director, the Tecnia Advanced Studies, affiliated to Guru Gobind Singh University. Dr. Ajay Kumar, he has more than 26 years of experience in the field of education and industry. Dr. Kumar has conceptualized and conveyed more than 30 national and international conferences and has attended several national and international conferences as guest of honor. He is a member of All India Management Association (IMA) and lifetime alumni member of Institute of Management Studies and Research, MD, University Rohtak. His aim is to work innovatively for the enhancement and betterment of education. So, sir, welcome to this webinar. Now, with this, I would like to invite the director, sir, Dr. Ajay Kumar, for his opening remark. Sir, please. It's very heartening to know that the Entrepreneur Cell of Tecnia Institute of Advanced Studies is celebrating World Entrepreneurs Day. It's a given mandate from the Ministry of Education Innovation Cell. It's a quarter four driven activities from 21st to 28th August 2021. In this series, the hindrances to entrepreneurs, we are having a star-studded panel over here. They will be enlightening our startups panelists over here, which are using this information for their own advantage. With us, Vikesh Bansal, chartered accountant. He has got a very vast experience on how to manage the company affairs and what are the things to be seen over there as a startup companies. He will be there after the program also. You can talk to him and you can ask him how the finance can be managed and how you have to work on with the GST, other liabilities, financial liabilities, so that your purpose is that you will be able to get right kind of knowledge and input so that you can be able to set your enterprise in the startup well. Dr. S.N. Chandak ji is a chairman Shield Biotech Limited. He has vast experience on various facets of the multi-dimensions labor company, and he can tell you how to diversify your venture and how to make your startup to make it on a fertile ground so that it can become a big plant in time to come. And Mr. G.S. Singhvi, chairman Hindustan Fiber Limited, is again a manufacturing unit. Here the manufacturing unit has got a different ramification in a way that how the raw materials to be taken up, how the things can be piled up, and how the order processing things can be done. And he has got a wisdom component just above that. Hindrances are not hindrances if we are being able to preempt the things. So it will be very interesting to hear all the panelists in time to come over here. Main thing is this, that the mandate which is the Institute Innovation Cell, which has been set up of for the incubator, to set up the incubator and be able to help up the various entrepreneurs. So of late we have been able to discuss that there are 8 to 9 successful startups from our students, and they are doing best. But one thing has been there: when the things are in infancy stage, and as you know, small baby requires not many vaccinations. So
lot many do's and don'ts are required so that the mortality rate should be bring down so to low. So we feel that the Indian government has got this new focus after the academics. What additional things can be worked on and skill sets can be developed to make a company to move further. The students over here in Tecnia should not become a job seekers. They are being able to provide jobs to others. So these two things are being taken. We should not make our students job seekers. Rather, they will be job providers for others. If the MBA is looking for a job, then what to talk of the BA and the BCom or the BSc students? They are going to be taking jobs. So we don't want that our students should be in line of getting jobs. Rather, they should be make enough fortunes to be able to set up their own venture. Uh, the only thing is that the person who takes up the risk for the new business, he creates an enterprise with his labor, aggregate capitals, right? It's entrepreneurship is a very highly, you can say, rewarding and economic generation of wealth and growth and innovation. Things are going to come up over there for the plus entrepreneurs file, pay taxes, depend on how the business set up in the terms. So overcoming the bureaucracy, hiring of the talent, obtaining finance, all these things are there. Lot many ramifications are there without holding much of the system between the panelist and you. I feel it. I'm going to make the stage open for our panelists to further make the process in this direction. Thank you very much, Dr. Nivedita, for giving me the time over here to express my views. Over to the panelists. Thank you. Nivedita, ma'am. Thank you so much. Now I would like to request Mr. Vikesh Bansal to please. Yeah, I would like to thank you, Dr. Ajay Rathore and Dr. Nivedita, to invite me on such a platform. And the topic of today is hindrances for the startup. So, for a new entrepreneur, it is very difficult to understand कि वो अपना स्टार्टअप शुरू कैसे करे. तो स्टार्टअप के लिए जब बच्चे स्टार्ट करते हैं, कोई भी नया बिजनेस शुरू करते हैं, तो देर आर सो मेनी क्वेश्चंस इन देयर माइंड कि कैसे स्टार्टअप शुरू करें, क्या करें, कैसे कैसे चीज़ें चलती हैं, किस तरह से होता है. तो देर आर सो मेनी क्वेश्चंस इन देयर माइंड. उसके लिए ना मैंने एक पीपीटी भी मैं अभी शेयर कर रहा हूँ अपनी. तो जो सबसे पहला क्वेश्चन माइंड में आता है कि स्टार्टअप होता क्या है ना, और हम इसको शुरू कैसे करते हैं. तो स्टार्टअप की डेफिनेशन क्या है. स्टार्टअप जो है वो शुरू करने के लिए हमारे को जैसे प्राइवेट लिमिटेड कंपनी हमें बनाना चाहिए, पार्टनरशिप फर्म बनाना चाहिए, या एलएलपी के थ्रू हम अपने आप को रजिस्टर करें, ये समझने की ज़रूरत होती है. तो वो ये डिपेंड करता है कि कितने लोग हम मिलकर स्टार्ट कर रहे हैं. लाइक 2 लोग हैं, 3 लोग हैं, 4 लोग हैं, और उनका पर्सपेक्टिव क्या है, फर्दर आगे कितना उनका विजन क्या है, उसके हिसाब से हमें इनकॉर्पोरेट करना पड़ता है कि हम कंपनी के थ्रू चलें या हम पार्टनरशिप फर्म के थ्रू आगे जाएं. ठीक है. जो स्टार्टअप की डेफिनेशन के हिसाब से जो टर्नओवर होता है, टर्नओवर का मतलब सेल्स, वो सेल्स 100 CR से ऊपर का नहीं होना चाहिए, जो कि स्टार्टअप की डेफिनेशन के हिसाब से. उसके बाद स्टार्टअप के लिए जो है वो क्या चीज़ें ज़रूरी है समझना. वो सबसे पहले तो उनको स्टार्ट करना पड़ता है कि वो पैसा कहाँ से लेके आए, फंडिंग कैसे होगी. उसके लिए गवर्नमेंट की कुछ स्कीम्स हैं जो स्टार्टअप को प्रमोट करती हैं. जैसे सबसे पहले स्टार्टअप इंडिया की वेबसाइट पर अपने आप को रजिस्टर करना पड़ता है. वहाँ पर अपना जो है वो एक यूज़र नेम और जनरेट होता है. यूज़र नेम वगैरह जनरेट करके ईमेल करके आप वहाँ रजिस्टर हो जाते हैं स्टार्टअप. उसके बाद जो है एक
DPIIT रजिस्ट्रेशन रिकॉग्निशन होती है। DPIIT में ये होता है कि जो स्टार्टअप अपना कोई इनोवेटिव आइडिया अपना कोई लेके आते हैं, नए नए आइडियाज होते हैं, उन नए नए आइडियाज के हिसाब से DPIIT में रिकॉग्निशन हो जाती है। ये भी एक ऑनलाइन सेटअप है। ऑनलाइन आप इजीली इससे अपने आप को रजिस्टर कर सकते हैं। जब आप DPIIT में रिकॉग्निशन का एक सर्टिफिकेट होता है वो आपको मिल जाता है, उसके बाद जो है आप फर्दर मार्केट में अपने आप को पिच करते हैं। जो DPIIT रिकॉग्निशन होती है उसके लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए होते हैं वो वहाँ पर साइट पर पता लग जाता है। ज़्यादा कुछ नहीं है, लाइक पेन, डिटेल्स ऑफ द डायरेक्टर्स और प्रूफ ऑफ कंसेप्ट की आप किस तरीके से कैसे पिच करेंगे, वो सब डिटेल्स होता है। उसके बाद एक रिकॉग्निशन नंबर हमें मिल जाता है जिसके बेसिस पर हम फर्दर आगे काम कर सकते हैं। जो मेन चैलेंजेस आते हैं, मेन चैलेंजेस तो यही आता है कि सबसे पहले हम अपने आप को कैसे एस्टेब्लिश करें, पार्टनरशिप फर्म बनाएं कि प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनाएं। लेकिन एक स्टार्टअप के लिए प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनाना ज़्यादा बेटर होता है, क्योंकि वो उसके अंदर जो इक्विटी होती है वो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के अंदर इजीली मैनेजेबल होती है एज कम्पेयर टू प्राइवेट पार्टनरशिप फर्म या LLP। सेकेंडली हमारे को जो मेन बिजनेस जो कंपटीशन है वो हमें जो ऑलरेडी मार्केट में लोग नए बैठे होते हैं उनके साथ काफ़ी कंपटीशन रहता है। बट यदि आपका आइडिया यूनिक है, डिफरेंट है, तो आपके लिए ग्रोथ की अपॉर्चुनिटीज काफ़ी ज़्यादा होती हैं। आपने आजकल यूनिकॉर्न्स के बारे में सुना होगा, उनके नए नए आइडियाज़ हैं, नए नए इनोवेटिव आइडियाज़ होते हैं। ट्रेडिशनल बिजनेस का सिस्टम खत्म हो चुका है। ये कुछ हिंड्रेंसेस हैं, जैसे जो नए स्टार्टअप्स होते हैं उनको उनके साथ कस्टमर्स की एक्सपेक्टेशंस काफ़ी हाई रहती हैं। तो मार्केट में सुटेबल कैंडिडेट मिलने मुश्किल होते हैं। नए स्टार्टअप्स पर जल्दी से लोग रिलाई नहीं करते, जॉब के लिए मुश्किल आती हैं। फाइनेंशियल मैनेजमेंट का जो है वो प्रॉब्लम रहता है। बैंक उनको फाइनेंस करते हैं, सीड कैपिटल के थ्रू भी फाइनेंस होता है। अलग अलग इन्वेस्टर्स भी छोटे स्टार्टअप्स को फाइनेंस करते हैं सीड मनी के थ्रू। वेंचर कैपिटलिस्ट भी उसको फाइनेंस करते हैं। बट जो भी लोग फाइनेंस करते हैं वो सबसे उनको ज़रूरी है कि जो आइडिया है ना नए स्टार्टअप्स का, वो उनको पिंच करना चाहिए। उनको समझ आना चाहिए कि इसके अंदर ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज काफ़ी ज़्यादा हैं। नए स्टार्टअप्स को टैक्स की एग्जम्पशंस भी हैं। इनिशियली 3 इयर्स तक उनको कोई टैक्स नहीं लगता है। और जो भी कंपनीज 1 अप्रैल 2015 के बाद इनकॉर्पोरेट हुई हैं उनके लिए वो एग्जम्पशन एप्लीकेबल है, और ये 10 इयर्स तक का है। मेनली स्टार्टअप के लिए ये है। बाकी किसी की कोई क्वेरीज हो तो डिस्कस कर सकते हैं। Any student who wish to ask anything from the esteemed guest? किसी को कुछ क्वेश्चन पूछना है बच्चे? Anything, any doubt? There are so many students I know that you are planning for your own business. So sir has given a brief idea that how you can actually prepare for your business when it comes to various legal and documentation part is concerned. So any student, if you have any doubt, you can please raise your hand and ask the question to sir. Sir, nobody is asking, but no student will ask. Can I ask you a question, sir? Yeah, please. Sir, whenever we are talking about any startup, the only problem that we guess that how to convince the angel investors, because finance is something which we really find difficult to arrange when it comes to startup. So, what are the key या areas wherein we really need to work hard for angel investors? देखिए, एंजल इन्वेस्टर जो है वो तभी आता है जब आपका जो इनोवेटिंग आइडिया है ना वो आपके वो कन्विंसिंग होना चाहिए प्रॉपर। इन्वेस्टर्स अट्रैक्ट होते हैं वो 100% उस आइडिया के ऊपर ही अट्रैक्ट होते हैं कि वो क्या उसका आइडिया है, क्या थिंकिंग है, और उसको वो उस आइडिया को कैसे हम मोबिलाइज करेंगे, कैसे उसको हम
इनिशियलाइज करेंगे। जो सुप्रीम चीज है वो वो आइडिया ही है। लाइक जैसे आपने सुना, आपने सब देख ही रहे हैं, हम लोग जोमेटो का भी आईपीओ आया है। जोमेटो ने सिर्फ एक रेस्टोरेंट के मेन्यूज को कंसोलिडेट करके और हम लोगों को अपने मनचाहा फूड प्रोवाइड कराया है। आज से 10 साल पहले हम लोगों को अलग अलग रेस्टोरेंट में जाना पड़ता था अलग अलग चीज खाने के लिए। तो ये वो एक आइडिया ही है जिस आइडिया के बेसिस पे वो लोग सक्सेसफुल हुए। और आज की तारीख में तो देयर आर सो मैनी इस तरीके के एग्जांपल्स हैं हमारे पास। तो वो जो आइडिया है उस आइडिया पर ही इन्वेस्टर्स अट्रैक्ट होते हैं ऑलवेज। Okay, sir. Okay, sir. Thank you so much. Thank you so much, sir. Yes, Dean sir. विकेश बंसल जी, what are the paper liability for the startups? Paper liability कौन कौन सी होती है startups के लिए? If the student has, lot many students have they start the venture but they don't know the paper, starting the paper documentation नहीं पता उनको। स्टार्टअप के लिए सबसे पहले जो स्टार्ट करना होगा वो ये समझना होता है कि हमें प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनानी है, पार्टनरशिप बनानी है, एलएलपी बनानी है। तो एक बार वो स्ट्रक्चर डिसाइड होता है, जैसे मैंने अभी पहले भी बताया था कि इन तीनों स्ट्रक्चर्स में मेरा जो एडवाइस होती है वो ऑलवेज प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के लिए होती है कि प्राइवेट लिमिटेड कंपनी हमें बनाना चाहिए और उसके बाद उसको इनकॉर्पोरेट करके और फिर हमें स्टार्टअप के लिए अपना जो वर्किंग है वो स्टार्ट करना चाहिए। जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी हम बनाते हैं वो रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी के थ्रू पूरा उसका प्रोसेस होता है, उस प्रोसेस के थ्रू प्राइवेट लिमिटेड कंपनी इनकॉर्पोरेट की जाती है। जैसे आप प्रोसेस पूछेंगे, पेपर्स पूछेंगे, तो जैसे प्रोसेस में क्या होता है, सबसे पहले हमें डिसाइड करना पड़ता है अपने स्टार्टअप का कि नाम क्या रखना है। उस नाम सर विकेश जी मेरे पास अभी यहाँ 4-5 बच्चे है आए या थे। नहीं है वो नाम? विकेश जी मेरे पास अभी 5-7 बच्चे आए थे। दे हैव स्टार्टेड देयर वेंचर, they have made a brand, they have made a logo, they have made a manufacturing unit, they start up the manufacturing system, but they are doing it unorganized way, in a very unorganized way. We have to make them organized. They have already started up, they are successful, but the thing is that if they are going to make the things on paper, then the entity is going to be created. Unless and until you don't make the things on paper, the entity is not created. So the first step, 1 2 3 4, these kind of steps they have to take up. That recommendations I want from you. Namita madam, please. Aji sir, Aji sir. Thank you so much, sir. I think that no daddy wala CM tha they have clear, they don't have any doubt. So thank you so much, Vikesh ji. It was indeed good and it was wonderful hearing you. You told us about the main challenges that how to establish whether to go for private or the public sort of company. What are the different competitions or different hurdles like competitive advantages, financial management, unrealistic customer expectation, suitable candidate finding, winning trust of the customer, funding and tax tool are the important things which startup founders found as hurdles. Thank you so much for giving an insight at how to really prepare for your startup. Now to proceed further, now I invite Dr. S.N. Chandak. If you talk about Dr. Chandak, he is a multifaceted personality. Words, if I try to speak about Mr. Chandak, Dr. Chandak through word, it will be always limited. So, Dr. Chandak, you are very enterprising and you have been enterprising all along your life. Your hard working, your discipline and clear-minded approach is it is very much evident from the success of the company which you are running as of now, Shield Biotech. So, with this, I know that you are a great scholar, you are author, writer, motivator, and you are engaged in various social activities in various parts of the country. Your efforts in the NGO SUNY is also worth mentioning. And with this, I require and I request you to come and address the students and share your experience. Sir, Dr. S.N. Chandak, sir, please. Thank you. First of all, thanks to invite me, Dr. Rathod, Dr. Nivedita, to share my experience with the student. My compliments to your founder and chairman, Dr. Ram Kailash Gupta ji also, who has created
such a prestigious organization to provide multifaceted education to students. Apart from teaching, he is concerned about overall growth of the students so that they become successful in every walk of life. To be studious is good, but one should be all-rounder, go-getter and ready to face challenges of the life. Gentlemen, my dear students, the word, first of all, the today's subject is very interesting and we all have to understand the word entrepreneurship. This word is very difficult. I tell you, in the class, especially in the final year, there is a lot of discussion what you are going to be. One says I will face civil service. One says I will be entrepreneur, and one says I will adopt a legal profession like that. But I tell you how entrepreneurship is groomed. Sometimes it is hereditary. If you are from the business family, you have a business blood, you have entrepreneurship blood. Then if you have a strong will or desire, then you can be entrepreneur. Then another issue is surrounding. If your surrounding is like entrepreneurship, or you have your friends who are entrepreneur, you can also be dream of making being entrepreneur. So this is all. But I tell you, the biggest part in to be a successful entrepreneur is you have to set your goal and you have to set your priority. You have to set your desire. Lot of people, lot of our dear students, they remain under confusion and they spend early part of their life 2-3 years under confusion. एक ही गलती करता रहा, फूल चेहरे पे थी और आईना साफ करता रहा. आप समझे इस बात को कि हम लोग बहुत सारा टाइम, लॉट ऑफ आवर टाइम we waste in deciding the goal. A lot of people remain under confusion. So the the decision has to be very clear. The decision has to be very clear. You must decide your goal, which line you want to go, which area you want to go, because this also depends how it that decision depends upon detailed study of the product. First of all, you have to decide the product. Then you have to see the competition. Then you have to see the import possibility or the import trend of that product. Then you have to examine the substitute. Then you have to examine the technology available, because the success mainly depends on which technology you are adopting. Are you aware about the various technology prevailing in India and prevailing in other countries of the world? Then another thing, to be a successful entrepreneur, you need to have proper and adequate finance. Proper and adequate finance by means you must, generally the consultants prepare the wrong projections. And when you must have, you should not only depend on that project report being prepared by someone, because you must always keep some cushion for your mistake, some cushion for your losses, some cushion for the opportunities. And because we have seen in the past, lot of venture, lot of companies, lot of businesses have suffered badly because of lack of financing. So then again, very important issue I want to draw your attention, that is finance at reasonable rate of interest. If, because today it is a competitive world, and if your finance is at a higher rate, then it affects success of your venture. Then the usage of the finance. Sometimes we go to the bank, we take term loan and we take working capital. Lot many people make mistake. They divert short-term fund for long-term usage. So that also priority you must decide. Apart from the first decision, then finance, and then comes the teamwork. I tell you today that it is a competitive world, and if you want to be a successful entrepreneur, then you must select the experts. You must select experts of your product.
You must select expert of your process. You must select expert of your finance activity. You must select expert of your marketing, because your expert should have global outlook. Your expert should have the R&D nature, and they must think, they must always look for new concept. Then only our entrepreneurship, the organization which we create, can move to the success. I tell you, because there are lot of problems that we get, lot of jerks when we start the first. There are lot of problems for first generation industrialists. They get losses in beginning. Here comes the role of firm determination. If if you start making losses, and if you lose the heart, and if you close the business, then it is a closure for your whole life. दोस्तों, मैं दो लाइन बोलता हूँ. मान लो तो हार गए, और ठान लो तो जीत गए. In case you are facing lot of problem, even then don't come under any pressure. You be firm and try to solve all your problems, and the one day problem will be over, and you can turn yourself a successful businessman. I tell you, regarding entrepreneurship, you have to do excel in all type of preparation. And then here comes the role of personal qualities also. To be a successful entrepreneur, you have to develop lot of personal qualities. तीन नियम आपको बताता हूँ. फंडामेंटल तीन नियम आप याद कर लो बच्चों. दूसरों से अधिक जागो, दूसरों से अधिक काम करो, और दूसरों से कम अपेक्षा रखो. अगर आपके जीवन के इस तरह ये फंडे क्लियर होंगे, तो आप एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन बन सकते हो. देखिए, इसके अंदर आपको बहुत सारी और क्वालिटी अपने आप में डेवलप करनी पड़ेगी. आपका मिशन, विजन एंड स्ट्रेटेजी बहुत क्लियर होना पड़ेगा. आपको टाइम मैनेजमेंट करना पड़ेगा. अगर बिगिनिंग में आपके पास एडुकेट स्टाफ नहीं होगा, आपको मल्टी एक्टिविटी करना पड़ेगा. मल्टी एक्टिविटी करने के लिए आपको टाइम प्लान करते रहना पड़ेगा. अगर आप टाइम मैनेजमेंट नहीं करेंगे, तो आपको प्रॉब्लम आएगा. दूसरा, इसके साथ साथ आपको कुछ अपनी और पर्सनल क्वालिटीज भी डेवलप करनी पड़ेगी. अपार्ट फ्रॉम एक्सेल in business, apart from excel in product quality, marketing, management, everything, I still recommend you some personal development of personal qualities like blessing. You should take blessing of number one, God. Number two, your parents, because the blessing of the parent is the most powerful thing in individual's life. The things, the work which cannot be done by anything can be done with the blessing of your parents. Then blessing of say birds, animals, they also helps you, because आज की तारीख में बिजनेस में सक्सेस होने के लिए आपको बहुत सारी चीजों की आवश्यकता है. आपको यू नीड ए सपोर्ट फ्रॉम ऑल एंगल, ऑल सेक्टर ऑफ सोसाइटी. दे ऑल शुड हेल्प यू. तो ये सब पर्सनल क्वालिटी भी आपको अपने आप यहाँ डेवलप करना पड़ेगा. दूसरे दोस्तों, आपको ऑलवेज अपनी टीम का एक बहुत बड़ा रोल होता है. देन टीम में ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट आ जाता है. फर्स्ट ऑफ ऑल, आइडेंटिफिकेशन ऑफ टीम. आपको अच्छे लोग चुनने होंगे. आपको एक और कहा जाता है, I had been doing business since last 50 years, but still I feel that whatever executive I appoint, he should be more knowledgeable to me, because whatever fundas, whatever technique, whatever policy we have adopted, if this business has to grow, then my executive should be more knowledgeable, more equipped, with a more outlook than myself. So always आपको ये सब भी चीज दिमाग में रखना होगा when you select a team. Then again, gentlemen, my dear boys, selection of team is not enough. You must retain the team. तो टीम के साथ आपका रिलेशनशिप भी बहुत अच्छा होना चाहिए. तो अगर आपका रिलेशनशिप अच्छा नहीं होगा, तो आपका टीम चलेगा नहीं, लंबे समय नहीं चल पाएगा. तो टीम के साथ आपका रिलेशनशिप अच्छा हो,
आपका ऑर्गेनाइजेशन में दे कैन क्रिएट डिसिप्लिन, डेकोरम इन द ऑर्गेनाइजेशन, and they can take along the people, they can get the job done from their subordinates. I tell you, you alone, one entrepreneur alone cannot do much things. He has to depend upon the team, and your team must be capable to extract the work from their juniors. It should be a line system. The organization should be like a pyramid. So if you develop the system, then you can put your organization, an entrepreneur can put his organization on a auto mode. Like for example, I am giving you example of McDonald's. All over the world, you will find the same quality of the coffee, same quality of every product which they supply. Why? Because they have systems. In fact, if you go to that restaurant, you will find there are not very aged staff. They are all 18 to 24 years of age, but they have defined their system. So such qualities we must follow in the entrepreneurship which you are going to create. So these are the some of the things. Then I tell you, when it is entrepreneurship, you are a first generation industrialist, you are a first generation entrepreneur, you will have a lot of problems. That time it is a examination of your stress management. You must take care the things. You must always look for the solution rather than आप परेशान हो जाएं और सिर पकड़ के बैठ जाएं, तो जिंदगी में आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे और आप बहुत बड़ा रिस्क उठा लेंगे और वेंचर आपका हिल जाएगा। और अगर एक टॉप ऑर्गेनाइजेशन का टॉप आदमी हिल गया तो नीचे वाले सब हिल जाते हैं। तो आपको एक स्ट्रेस मैनेजमेंट के ऊपर भी बहुत सारा फोकस लगाना पड़ेगा। नाउ आई गो लिटिल फर्दर। आपका प्रोडक्ट कैसा हो, आपकी प्राइसिंग कैसी हो, आपका कंपटीशन कैसा हो। देखिए, एवरी एंटरप्रेन्योर सक्सेस डिपेंड अपॉन द प्रोडक्ट विच दे हैंडल। टाइम बता देना, विच दे हैंडल। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, एज आई टोल्ड यू अर्लियर, आपको प्रोडक्ट बहुत ढंग से चुनना होगा, जिस प्रोडक्ट का फ्यूचर हो, जिस प्रोडक्ट की डिमांड हो, जिस प्रोडक्ट का स्कोप हो, और जिस प्रोडक्ट की फ्यूचर में आपको लगता हो कि एक डिमांड जनरेशन होगी। कुछ प्रोडक्ट ऐसे होते हैं जिनकी डिमांड ऑलरेडी होती है, और कुछ प्रोडक्ट ऐसे होते हैं जो डिमांड क्रिएट की जाती है। जैसे लाइक एग्जांपल ऑफ ओला एंड उबर, देयर वाज नो सच प्रैक्टिस इन द कंट्री लास्ट एजेज। अब 50 से 100 साल पहले तक ऐसा कोई सिस्टम नहीं था, बट दे हैव क्रिएटेड ए डिमांड, दे हैव क्रिएटेड ए न्यू वेंचर, न्यू आइडिया। तो जैसे ओयो रूम्स हैं, आप इस तरह का कोई ऑर्गेनाइजेशन 50 साल पहले, 70 साल पहले नहीं होता था। तो इस तरह आपको अपना प्रोडक्ट, आपको अपना एरिया ऐसा चुनना होगा जो इनोवेटिव हो। जितना आपका आइडिया इनोवेटिव होगा, उसको आप इन सारे इश्यूज के हिसाब से हैंडल करेंगे तो आपकी सक्सेस निश्चित है। although I tell you there are failure in startup also, but we must always look for the positive side of the thing. We must always look that if you will plan everything judiciously, methodically, then success is bound to be there. Similarly, आपको अपने प्रोडक्ट में प्राइसेज का बहुत बड़ा रोल है। आपको प्राइसेज के बारे में काफी चिंतन करना होगा। आपकी प्राइसेज एट पार विद द कंपटीटर हो, आपकी प्राइसेज कम हो और ज्यादा हो। अगर कम प्राइस होती है तो कभी कभी कस्टमर अट्रैक्ट होता है, अगर बट एट द सेम टाइम आपकी प्राइस कम है तो कस्टमर कभी कभी कहता है ये मटेरियल हल्का होगा। और आपकी प्राइस तेज है तो जो आज ऑलरेडी एग्जिस्टिंग लोग हैं उनके मुकाबले आप प्राइस ज्यादा रखेंगे तो हो सकता है आपको चैलेंज आ जाए। तो प्राइसिंग का भी एक बहुत बड़ा रोल है। इसी तरह दोस्तों, मेरे दोस्त भाइयों, मेरे मित्रों, मैं आपको एक इसके साथ साथ मार्केटिंग में डिस्ट्रीब्यूशन का भी बहुत बड़ा रोल है। अगर आपने बहुत अच्छा प्रोडक्ट बना लिया और आप अगर प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन नहीं कर पाए तो भी आपके लिए बहुत बड़ी तकलीफ हो जाएगी, क्योंकि जो मार्केटिंग में ये फंडा है, जो दिखता है वो बिकता है। अगर कस्टमर आपके प्रोडक्ट को कहीं भी देख पाता है तो वो आपका प्रोडक्ट बिक सकता है। तो ये मैं आपको एंटरप्रेन्योरशिप से कुछ चीजें आगे ले जा रहा हूँ मार्केटिंग की तरफ। बट आई टेल यू, एंटरप्रेन्योरशिप में आपने एंटरप्रेन्योरशिप एस्टेब्लिश कर दी, आपने प्राइवेट लिमिटेड बना ली, आपने व्हाट्सएप बना लिया,
आपने प्रोडक्ट अच्छा ले लिया, लेकिन अगर मार्केटिंग ढंग से नहीं कर पाए तो आपका सारा काम गड़बड़ हो जाएगा। मार्केटिंग में दूसरा आता है यूएसपी। आपको अपने एंटरप्रेन्योरशिप में एक यूएसपी क्रिएट करना होगा, यूनिक सेलिंग पॉइंट्स, सो दैट यू आर डिफरेंट फ्रॉम अदर्स। इसी तरह इसमें मैं आपको और बता दूं, क्वालिटी का एक बहुत बड़ा रोल हर एंटरप्रेन्योरशिप में, हर बिजनेस में, हर इंडस्ट्री में होता है। आज आप देखिए, आपके सामने एक छोटा सा एग्जांपल है हल्दीराम का। हल्दीराम has started selling bhujia and rasgulla. Now where are they today? आज आपको जान के खुशी होगी मेरे प्यारे बच्चों, हल्दीराम का वैल्यूएशन 40,000 करोड़ है। कैन यू इमेजिन? कितनी मेहनत करके कोई आदमी इतनी बड़ी एम्पायर नहीं बना सकता है, इतनी वेल्थ क्रिएट नहीं कर सकता है, बट बिकॉज ऑफ इज वन फंडा ऑफ क्वालिटी, ही हैज नेवर कंप्रोमाइज ऑन क्वालिटी। तो आप भी जो भी अपना एंटरप्रेन्योर बनाएं, उसमें एक क्वालिटी का बहुत बड़ा पुट रखें, अपना माइंड सेट रखें कि मैं चाहे पैसे कम कमा लूंगा, लेकिन मेरे को अपना प्रोडक्ट क्वालिटी का देना होगा। इसी तरह एक एस्पेक्ट मार्केटिंग का दूसरा आता है कस्टमर सेटिस्फेक्शन, वो भी क्वालिटी से जुड़ा हुआ है। अगर आप ऑलवेज अपना रिव्यू करेंगे, अपने बिजनेस को रिव्यू करेंगे कि मेरे कस्टमर सेटिस्फाइड कैसे रहे, हमेशा डिससेटिस्फाइड कस्टमर को ट्रैक करेंगे, उसकी प्रॉब्लम सुनेंगे, उसके सॉल्यूशन निकालेंगे, तो ये आपके बिजनेस में आपकी गुडविल को हमेशा बहुत आगे ले जाता रहेगा। इसी तरह एक और क्वालिटी से रिलेटेड इश्यू है कंसिस्टेंसी ऑफ योर प्रोडक्ट। आपके प्रोडक्ट की क्वालिटी, जैसा मैंने अभी बताया, हल्दीराम का दही बड़ा जो 10 साल पहले आप खाते थे, आज भी उसका वैसा ही टेस्ट है। इसी तरह मैकडोनल्ड की कॉफी का पहले 10 साल पहले जो टेस्ट था, आज भी वही टेस्ट है। तो आप अपना जो भी प्रोडक्ट चूज करें, जो भी प्रोडक्ट अपनाएं, उसमें कंसिस्टेंसी होना बहुत जरूरी है। अगर आपने कोई कंज्यूमर ड्यूरेबल का काम अडॉप्ट किया है दोस्तों, तो आपको आफ्टर सेल्स सर्विस पे बहुत ज्यादा फोकस लगाना पड़ेगा, क्योंकि अगर आपने प्रोडक्ट अच्छा दे दिया, डिस्ट्रीब्यूट भी कर दिया, प्राइस भी ठीक है, और आफ्टर सेल्स सर्विस नहीं दी, तो फिर आपके कस्टमर सब नाराज हो जाएंगे, एंड देयर विल बी ए नेगेटिव पब्लिसिटी, एंड आपका उससे काम बनेगा नहीं। इसी तरह एक इसी से रिलेटेड सब्जेक्ट है अवेयरनेस। आपको अपने प्रोडक्ट की, जैसा मैंने कहा पहले, जो दिखता है वो बिकता है, तो आपको अपने प्रोडक्ट की बहुत ज्यादा अवेयरनेस क्रिएट करनी पड़ेगी। चाहे वो अवेयरनेस आप मीडिया से करें, चाहे प्रेस मीडिया से करें, टीवी मीडिया से करें, चाहे आप इवेंट करें, चाहे होर्डिंग लगाएं, चाहे कियोस्क लगाएं, जो भी हो, जो भी तरीका आप अपनाएं, बट लेकिन आपको अपने प्रोडक्ट की अवेयरनेस क्रिएट करनी पड़ेगी, और वो अवेयरनेस आपको रिपीट करते रहना पड़ेगा। बच्चों, आज पब्लिक जो है वो बहुत शॉर्ट मेमोरी की है। अगर आपने एक साल जनवरी के महीने में बहुत अवेयरनेस क्रिएट कर दी और आप 8 महीने मार्केट से गायब रहे, तो आपकी दिसंबर में जाते जाते सेल डाउन हो जाएगी। कारण है पब्लिक बहुत शॉर्ट मेमोरी की होती है। तो ये बहुत सारे इश्यूज हैं। मार्केटिंग के बारे में अपन अलग चिंतन कर सकते हैं, अलग से सेशन में हम स्टार्टअप के बारे में बहुत आधा घंटे का एक अलग बातचीत कर सकते हैं कि स्टार्टअप में क्या प्रॉब्लम आती है, इंडिया में किस तरह के स्टार्टअप ने शाइन किया है, स्टार्टअप बनाते वक्त क्या क्या सावधानी रखनी चाहिए, और ये बहुत स्टार्टअप का एक अलग सब्जेक्ट है। तो आज तो मैं एक ओवरऑल आपका जो एंटरप्रेन्योरशिप का सब्जेक्ट है, इसी के बारे में मैंने आपको बताया। अगर आपको इस बारे में कुछ डाउट हो तो आई कैन क्लेरिफाई ऑल योर डाउट, बिकॉज वी हैव ए प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस। हमने लोगों ने आपको बताते हुए मुझे कोई वो नहीं है, हमने 30 रुपए की नौकरी से बिजनेस शुरू करके आज मेरे पास 800 लोग काम करते हैं, और हम 15 से 20 टीचर काम करते हैं, और हमारे पास डेडिकेटेड लोगों की टीम है। तो इस तरह लोगों को बनाया, एक ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट किया है, अच्छा एटमॉस्फेयर दिया है, तो लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, काम कर रहे हैं, और दे फील रेस्पेक्ट टू वर्क विद मी। तो इसी तरह बच्चों, आपको मेरे से कोई भी क्वेश्चन हो, आई कैन डेफिनेटली आस्क यू, आई कैन क्लेरिफाई। और आपको मेरा तो यही निवेदन है, सोचिए, बहुत सोच समझ के एंटरप्रेन्योर बनिए, एंड वंस यू बिकम एंटरप्रेन्योर, यू हैव टू बी अ सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर। थैंक यू सो मच सर। आपसे सर जितना भी सुने हमेशा कम ही लगता है। I mean, जो किताबों में पढ़ा, I mean,
जो 3-4 इयर्स पढ़ने के बाद भी शायद इतना हमें समझ में नहीं आया कि जो आपने इस 20 मिनट में बता दिया. इट वाज कंप्लीटली कॉम्प्रिहेंसिव, सारा कुछ उसमें इंक्लूडेड था, नथिंग बियॉन्ड जो इसके बियॉन्ड. और बड़ी बड़ी चीज़ें भी बताई और बहुत माइन्यूट बारीक सी चीज़ें भी आप उठा के ले आए. फॉर एग्जांपल आपने ब्लेसिंग्स की बात भी कही है और एट द सेम टाइम आपने प्रोडक्ट प्राइसिंग, मार्केटिंग और फ्यूचरिस्टिक ह्यूमन रिसोर्स की भी बात की है, जो आप आने वाले टाइम के बारे में पहले ही सोच रखे हो, ऐसा आपको उसकी भी आपने बात की है. तो सर ये सारी चीज़ें तो सर बुक्स में भी इतना हमें समझ में नहीं आता है. थैंक यू सो मच फॉर दिस एनलाइटनिंग एंड इंफॉर्मेटिव सेशन, motivating session. Students, we are blessed to have Dr. Chandak with us. Anything, any doubt, if you wish to ask, kindly ask. Students, if you have any doubt, you can ask. Yes, Shilnidhi madam. Please, madam. Yes, ma'am. First of all, I would like to thank Tecnia director sir, Nivedita ma'am, you for such organizing such a motivational session for all of us. It is really a blessing to hear such experienced people. So my question is that although as you have Nivedita ma'am has also said that we have we have to work hard, and you have incorporated all the four P's and other things. But my question is, sir, when we go for any startup, so initially we face some problems like we are not getting clients, we are not able to explore the areas, we are not getting good guidance, we don't know where to start from. As you were saying, you had 30 rupees and now you have this empire. So sir, in that phase, what should keep us motivating? What things we should keep in our mind that one day we will be successful, and in what track we should go, so that we should keep traveling, we should keep walking on that lane and achieve success. तो सर वो एक मंत्र और बता दीजिए सर. Very good, very good question. I tell you, Thanks. जैसा मैंने आपको अपने बात में बताया, फर्स्ट ऑफ ऑल यू मेक अप योर स्ट्रॉन्ग माइंड कि मुझे ये बनना है. पहले बात, आप अपने लिए एक गोल सेट करिए, एक फर्म डिटर्मिनेशन बनाइए, एक अपना पक्का इरादा बनाइए. पहला काम ये करिए, एंड उसके बाद हमारी जर्नी शुरू होती है. Then we have to select product. तो प्रोडक्ट सेलेक्ट करने के लिए आपको हर काम के लिए डिटेल स्टडी करना पड़ेगा. मेजर प्रॉब्लम आती है, लोग किसी के कहने से, फ्रेंड के कहने से, रिलेटिव के कहने से दे जंप इनटू द बिजनेस एंड दे फेस द कॉन्सिक्वेंसेस. देखिए, कोई भी आपको सलाह दे, कोई भी कुछ कहे, कोई भी आइडिया बताए, आप सबकी सुनिए, बट आपको अपना उस प्रोडक्ट का, उस सब्जेक्ट का पूरा डिटेल्ड स्टडी करना पड़ेगा. उसमें कंपटीशन क्या है, प्रोडक्ट क्या है, उसकी नेशनल डिमांड क्या है, इंटरनेशनल डिमांड क्या है, टेक्नोलॉजी में चेंजेस क्या आने वाले हैं, उसका इंपोर्ट से क्या रिलेशनशिप है. तो ये सारी चीज अगर आप बहुत अच्छी तरह से सोच के काम करेंगे तो आपकी फेल्योर नहीं होगी. देखिए, होल प्रॉब्लम है वही जो मैं आपको बता रहा था. टुडे इट इज ए कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड. टुडे वर्ल्ड इज गोइंग वेरी फास्ट. आज का तारीख का टाइम एक्सेल का टाइम है. आप जिस भी एरिया में कूदे, आपको एक्सेल करना पड़ेगा. तो अगर आप बहुत सोच समझ के, बहुत स्टडी करके, बहुत प्रोस एंड कॉन्स सोच के, लोगों के फेल्योर देख के, लोगों के यूनिट्स देखनी चाहिए, लोगों की फैक्ट्रियां विजिट करनी चाहिए इफ नेसेसरी. जितना आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं, ओबेराय ग्रुप ऑफ होटल का आपने नाम सुना होगा. तो जो MS ओबेराय थे, वो शिमला में एक होटल में काम करते थे, बट ही हैड ए ड्रीम कि मुझे बेस्ट लग्जरी होटल वर्ल्ड में बनाना है, और उन्होंने इतना बड़ा ओबेराय ग्रुप तैयार किया. और मुझे आपको बताते हुए खुशी हो रही है, उन्होंने अपने लड़के को कहा, मिस्टर PS ओबेराय को, कि आप पहले 36 साल तक सारे वर्ल्ड के होटल घूमिए, देखिए,
कहाँ क्या क्या यूनिकनेस है, क्या क्वालिटी है, क्या कल्चर है, उसके बाद उन्होंने उनको बिजनेस में उतारा। तो मैं जो छोटी सी बात कह रहा था कि जो भी लाइन आप सेलेक्ट करें, जिस लाइन में जाएं, उसको पूरा स्टडी करें, उसकी यूनिटें विजिट करें, लोगों से मिलें, कंसल्टेंटों की राय लें, गवर्नमेंट पॉलिसी देखें, बहुत सारे सब्जेक्ट हैं। मेरा मतलब एक ही कहने का है, अगर हम विधिवत प्रॉपर तरीके से काम शुरू करेंगे तो हमारा फेल्योर का चांस बहुत नेग्लिजिबल होगा। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच सर। अच्छा, अभी हमारे पास हमारे डायरेक्टर, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर सर, चेयरमैन सर भी आगे हैं। नमस्कार वेरी सर, वेलकम टू दिस वेबिनार सर। नमस्कार, वेलकम। मैं काफी देर से जुड़ा हुआ हूँ और डॉक्टर चाणक्य जी का इतना एक्सपीरियंस वास्ट लेक्चर मैंने सुना है। बच्चों को इससे बहुत फायदा होगा। थैंक यू वेरी मच। प्लीज कंटिन्यू इट। जी सर, जी सर। तो चाणक्य सर, ये क्वेश्चन चैट बॉक्स में आया हुआ है कि क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन क्या हम में पैदाइशी होता है या हम इसको सीख भी सकते हैं? कैन वी लर्न आल्सो और वेदर इट इज इननेट इन आवरसेल्फ? क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन। वेरी गुड क्वेश्चन। आई टेल यू, देखिए पैदाइशी बहुत बेसिक चीजें होती हैं। हर चीज आपको खुद डेवलप करना पड़ता है। अगर आप में पैदाइशी थोड़ी सी क्वालिटी है, दैट गिव्स यू डायरेक्शन। एक बच्चा अच्छे गाने की उसमें कला है, लेकिन अगर उसने उस कला को डेवलप नहीं किया, उसने रियाज नहीं किया, उसने प्रैक्टिस नहीं की, उसने अपना अच्छा गुरु नहीं बनाया, तो वो बहुत अच्छा सिंगर बन के बॉम्बे फिल्म इंडस्ट्री में अपना नाम करके करोड़ों रुपए नहीं कमा सकता है। तो ये आपकी बात अच्छी है। दो तरह के लोग होते हैं, जिनमें बाई बर्थ कुछ क्वालिटी होती है और एटमॉस्फेयर मिलने से वो उन क्वालिटी को डेवलप कर लेता है। कुछ लोगों में बाई बर्थ कोई क्वालिटी नहीं होती, वो लर्न से ही आगे बढ़ जाते हैं। जैसे मैं मेरा एग्जांपल दूं, मैं आई एम फ्रॉम वेरी ऑर्डिनरी फैमिली और हमें एक छोटी जगह किशनगढ़ का रहने वाला हूँ। गवर्नमेंट कॉलेज से हम लोग पढ़े। तो मेरा कहने का मतलब है, हम लोग का कोई बैकग्राउंड बहुत बड़ा अच्छा बैकग्राउंड नहीं था, लेकिन हमने एक ही काम किया, वी हैव स्टार्टेड लर्निंग। जैसे आपके चेयरमैन साहब है राम कैलाश जी, इनसे भी हमने बहुत सारी क्वालिटी लीडरशिप की सीखी है, समझी है। तो कहने का मतलब है, आप हर बच्चों को लोगों से, अगर आप में बाई बर्थ कुछ है तो उनको डेवलप करिए, और आप में बाई बर्थ नहीं है, कोई निराश होने की जरूरत नहीं है। बहुत सारे लोग हैं जिनको बिगनिंग में कुछ नहीं आता था, वो लर्न करके स्कॉलर बन गए और उन्होंने जीवन में नई ऊंचाइयों को छुआ है। तो ये चीज अपने को बहुत क्लियरली समझ लेनी चाहिए। थैंक यू।